सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो गाइस आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट होने वाली है। नमन की जुपिटर में से फ्यूल निकाल के क्लीन करते हैं पूरा कैबिन वगैरह जितना भी है ना, फ्रंट फेयरिंग वगैरह। एक सेकंड दिखाया था मैं आपको ना, जो ये पूरा फ्रंट कैबिन है इसे क्लीन करते हैं ना। देखते हैं पेट्रोल से कहाँ तक क्लीन हो पाता है इसे, उसके बाद में इंस्टॉल करेंगे जो भी सामान होगा। पहले से क्लीन कर लेते हैं पूरे कैबिन को, ठीक है। ठीक है, निकालना पड़ेगा ये तो। हाँ है इसमें, ये क्या कहते हैं। एनीवेज गाइस पेट्रोल तो हमने निकाल लिया। अब देखते हैं फिल करते हैं, बिकॉज थोड़ा टैंक में पेट्रोल कम है इसमें और फ्यूल पंप वगैरह पे लोड ना है, तो इसलिए हम फिल कर लेते हैं ना। तो हाँ अटैच कर लेते हैं, बस आराम से करना, ठीक है। ये सीधा करना भी है, ठीक है कर लेंगे, पहले तू अटैच कर। सो गाइस पेट्रोल फिल कर रहे हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखें, इजीली करियो है ना। निकाल, स्टीयरिंग सीधा कर लेना। गाइस बेसिकली आपको फनल का यूज़ करके थोड़ा जेंटली करना है, बिकॉज पेट्रोल का जो है वेस्टेज हो सकता है, ठीक है। थोड़ा चीज़ माइंड में रखनी है अपने। तो अब थोड़ी देर बाइक को स्टार्ट करेंगे, थोड़ी देर में आइडलिंग कंडीशन पे, थोड़ा जो इंजन सर्कुलेशन प्रॉपर हो पाए और बैटरी चार्ज हो पाए ना इजीली। गाइस बेसिकली पेट्रोल तो फिल कर दिया, विदाउट बाइक को थोड़ी टिल्ट सीधे खड़ी करके बाइक स्टार्ट करते हैं ना। उसके बाद कैबिन वगैरह साफ़ करेंगे पेट्रोल निकाल के पूरा प्रॉपरली। सीधी खड़ी कर लेना। हाफ लीटर पेट्रोल निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कैबिन क्लीन करते हैं। इस गाइस बाइक को मैं सीधा कर रहा हूँ, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ ना। देखते हैं गाइस BS4 कितने साल लेती है स्टार्ट होने में, ठीक है। वन टू थ्री गाइस, ये पावर है BS4 की, ठीक है। बाकी इस आइडलिंग कंडीशन पे ओपन करके छोड़ दें, मिलते हैं 5 मिनट बाद, ठीक है। Few moments later.